कहाँ जाओ वो क्रॉस करने वाले इसका टच करके कोई बोला होगा उधर एक पॉइंट मिला दैट इज द सुप्रा स्टर्नल नॉच स्टर्नम के ऊपर सुप्रा स्टर्नल नॉच तो कल आते वक्त वो पढ़ के आना बोला मैंने पेक्टोरल रीजन इंसिशन मिला फिर नीचे बोनी पॉइंट्स want to feel it with your fingers this is the first thing half is the shafts से बढ़िया half से ग्लाउस अपना होना चाहिए मैं नहीं दे और आप टच करके समझिए हमारा स्टर्नम जैसा बढ़ाया है तो पॉइंट आइए पॉइंट take that so what we are doing we want to put the first point Then from the second मिलेगा ऐसे जाएगा और मिलेगा और इसके बाद ऐसा आएगा एक नीचे आएगा एपीडियस में नीचे कलर का ले जाता है जैसे कि ऐसी चीज को हम सच में अपनी बॉडी में वहाँ इसमें थोड़ा ये पहला हमारे बॉडी के बारे में सबको लिखना ये बॉडी आराम से एक पॉइंट हो गया अब हमारा सेकंड पॉइंट होगा क्या आगे ना करता जैसा ही बॉडी प्रोसेस खत्म होगा बॉडी में सारे पास वो सब जाना है व्हाट इज नीचे क्या क्या है सो दिस इज द सेकंड पॉइंट सेंटर से आया से बॉडी प्रोसेस जब हम खत्म हुआ और इसके नीचे जो पॉइंट दिस इज द सेकंड नहीं है सबको ऐसा है सच करते ही जा रही है ये बॉडी का प्रॉब्लम है क्या नहीं बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है बलून के अंदर पानी भर के टच किया जैसा पानी आ रहा है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अभी फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकंड सो दिस इज द फर्स्ट नंबर हमारे पास का फर्स्ट सेंसेशन तो यहाँ से आप ये सेंटर अब एक अंदाजा ये सारी चीज सब कॉपी में मार दो जैसे मारिए So this type of sensation, you can see the line, nothing other than This is the first position, the first point. Now we want to put a point and turn the second number up. This is the soft line. So first of all, we want to see you can put a round around the nipple. This is nipple. इसका हम लोग black part को हम बोलते हैं areola. इसको round nipple. So very important landmark. क्यों? ये कौन सा साइड है? बॉडी का कौन सा साइड है? लेफ्ट. ये इनका कौन सा साइड है? इसका हाथ का. ऐसे हमको समझ लो.
नॉर्मल पर्सन भी कोई आपके हाथ से नहीं सुनना horizontal area focus on just below the nipple तो आप बस उसको ऐसे ही रहने हमको इससे कुछ नहीं अब हमारा ड्यूटी है नेक्स्ट पॉइंट का ठीक है अब सावधान नहीं होना कंट्रोल योरसेल्फ अब तो सब्जेक्ट बनना इस बात पूरा